Hello students, welcome to the next lecture of subject Basics of Industrial Engineering. In our today's lecture, we will discuss our second chapter, which is Production Operations Planning and Control, prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sekarwar, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. So let us begin with our chapter. Now, first of all, what is production or operations planning and control? So let us see production. What is production? So production is a process whereby the raw material is converted into semi-finished products and thereby adds to the value of utility of products, which can be measured as a difference between the value of inputs and value of outputs. तो हमारा होता क्या, प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक तरफ से अपना इनपुट दे रहे हैं, दैट मीन्स आवर रॉ मटेरियल, ठीक है, और दूसरी तरफ आउटपुट मिल रहा है हमको, विच इज़ सेमी फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है. दिस प्रोडक्शन function comprises of activities of procurement, allocation and utilization of resources. The main objective of production function is to produce the goods and services demanded by the customers in the most efficient and economical way. Therefore, efficient management of the production function is the utmost importance in order to achieve this objective. Now, we know that कि भाई प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ से बनता है, जैसे प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. तो सबसे पहले हम प्रोक्योर करते हैं, उसको अलोकेट करते हैं वर्क में, ठीक है, और फाइनली वी आर यूटिलाइजिंग दैट रॉ मटेरियल. जो मेन फंक्शन है हमारा प्रोडक्शन का वो है कि भी कस्टमर के पास सबसे अच्छी तरह से और मोस्ट इकोनॉमिकल वे में हम सुविधाएं पहुंचाएं. फॉर दैट हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट अगर हमारे पास प्रोडक्शन है लेकिन उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे, सो वी आर नॉट एबल टू सेंड इट इन और थ्रो इट इन और मार्केट, ठीक है. Now, production planning involves the organization of an overall manufacturing system to produce a product. The various activities involved are designing a product, determining the equipment and capacity requirements, designing layout of physical facilities, designing material handling system, designing sequence of operations. So these are few activities जो हमें प्रोडक्शन में याद रखनी है. Now let us consider the factors determining the production planning procedures. So these factors are mainly distributed into three factors. So there are three factors determining the production planning procedures. First, volume of the production, which means the amount and intensity of production planning is determined by the volume and character of operations and nature of manufacturing process. Production planning is expected to reduce manufacturing cost. Next, nature of production process. So in job shop, the production planning may be informal and the development work methods is left to the individual workman who is highly skilled. तो ये जो चीज़ें हैं, और थर्ड हमारी जो चीज़ है वो है नेचर ऑफ ऑपरेशंस. सो डिटेल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. सो these are major factors which we need to consider for our production planning procedure. एक तो वॉल्यूम होना चाहिए, प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है. दूसरा हमारा प्रोडक्शन की प्रोसेस कौन सी है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है, और हमारे ऑपरेशंस, हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो कैसे हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम. So there are two interrelated subsystems in the production planning system. Our first is
production planning system, and second is process planning system. So the for a generic business process which has a data and its system at all levels, namely plant operation level, physical variable control level, process control levels, and information control level. So these are few factors. ये जो है उस पर हमारा ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. पहला है हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग, दूसरा है प्रोसेस प्लानिंग. अभी जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो किस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, कैसे बनाना है, और जो प्रोसेस प्लानिंग है वो हमारे ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कौन कौन से होने वाले उस पर डिपेंड करता है. Again, it is resulting in a vertical and horizontal system interfaces between the two external and internal system modules, and which is characterized by the real world feedback information in respect of customer requirement, which are becoming increasingly local and instant product needs. Next is production cost and capabilities. Next is input orders and innovation desired, and finally questions etc., which presents itself as an open system. Now this leads to the modeling of the business process as integral to closed loop information and a control system. तो ये पूरा जो है एक क्लोज लूप बना देता है ना पूरा इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिस्टम जैसा हमारा. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोडक्शन कंट्रोल, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल फंक्शन. So it provides a function of parts, production of parts, assemblies and products of required quantity and quality at required time. This coordinates, monitor and feedback to the manufacturing management the result of production activities, analyzing and interpreting their importance and taking correct actions. This also provides optimum utilization of all resources. It achieves the board objective of low cost production and reliable customer services. Next, what are the benefits of control functions? It improves in profit through maintenance of balance inventory of material. Next, it balance and stabilize production बना के by maximizing the utilization of equipment, by minimizing the investment in inventory, by reduction in the setup cost, by reduction in setup cost, by reduction in scrap, by maximizing the invention in industry competitive advantages, reliable delivery to customer. It shortened the delivery schedule to customer, and it lowers the production cost. So these are the benefits of control function. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.